Yeah. So, so, hello, my dear friends. This is your friend C. Jatin Agarwal, and welcome to this ABC. ABC means all about campus. In this platform, you will know everything about ICI campus, big centers. I have introduced basically candidates from big centers of ICI from Me 24 batch. They will share their experiences on interview preparations and about the environment of the campus and about GDs, GTs, and what how they basically dealt with the anxiety and how they dealt with the multiple interviews at a time, offers, all these things will be covered. We'll gain some insights from them. So for today, we have a candidate from Mumbai campus. He is CA Hardik Jain. He is presently working in Reliance. And firstly, the session would be we'll have a brief introduction about Hardik, and then we'll have questions and answers of your campus, right? So starting with Hardik. So hi Hardik, Hi, Jatin. How you how you doing? I'm doing fine, thank you. Can we have a brief introduction about you of what? Okay, yeah. So, as you already know, my name is Hardik Jain. I've cleared my CA in May 2024 exam. I belong from Jaipur. I did my articleship in a mid-sized firm in Jaipur itself. I registered myself for Mumbai campus, and luckily I got Reliance. Yeah, I Okay, think okay, nice. that. Yeah. So let me tell you guys that Hardik is so kind person that one only once I approached to him to guide the students on this campus and all, and he straight away say yes to that. So we are happy to let you hear Hardik, and the questions are which campus and why choose the Bombay campus as a center? Means why you chose Bombay Center Okay. basically. Bombay Center. Yeah. Okay. Statistically, जो पिछले कैंपस से मैंने देखा था, इट वाज लाइक कि मुंबई में सबसे ज्यादा कंपनीज आती हैं. सिंस आई डिड नॉट हैड अ रैंक एंड आई हैड एन अटेम्प्ट इन इंटर एज वेल, आई वांटेड टू Okay. गेट एज मेनी शॉर्ट लिस्टिंग. आई जितनी आए उतनी ज्यादा अच्छी. एंड मुंबई में सबसे ज्यादा आई आती है, और इस बार आई भी. और मुझे Okay. वैसे भी मुंबई बहुत पसंद है. आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ जयपुर टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स. Okay. And Okay. if I say some numbers, I'll say कि out of 250 companies जो पूरे campus में आई थी, 74 were in Mumbai, and there were a hell lot of chance for walk-ins and all. Right. So all the statistical data prove that Mumbai is the best for you. And any shortlisting criteria based on your marks and how many companies you have been shortlisted for at the time? Okay, I have been shortlisted by 11 companies, 10 in the first Okay. shortlisting and one is the in the last मतलब second one. Okay. Yeah. Okay. uh, And दो. like you basically gave the consent for four companies. So how you prepared for those companies, technical questions, and what things you read through during this preparation stages, any GDs, group discussions you have been going through, or psychometric test. So like that, your preparation strategy for that. For sure. Luckily, actually I am very afraid of GD. Okay. मतलब मुझे जीडी करने से थोड़ा डर लगता है. एंड लकीली मेरे किसी भी कंपनीज में जीडी मैंडेटरी नहीं था, बट देयर वर साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट. वन ऑफ द कंपनी टुक साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसमें क्वेश्चन था कि व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक दैट योर कलीग should think you have. You have to check box all the qualities in that, and the next question was ki what all the qualities you have, and if you got one wrong, they'll reject you. Okay. Yeah, I All got in a single rejected round. because of that. Yeah, I think they have shortlisted around 2,000 candidates, and they took interview of around 100 to 200 candidates only. So this was the shortlisting process for one of the company which I gave consent to. Can And you name that there was company? another, like, yeah. Can you name that Could you please company? repeat? Can I'd rather you not. name? Okay. Okay. Yeah, Excellent. I can tell Excellent. you which industry it belongs to. It is an NBFC. Okay. Got that.
And other one? And the other one, okay, I gave consent to Reliance and another company as well. They both had quantitative aptitude test. Reliance का बहुत hard था because they were asking me about trigonometry questions जो to be frank मैंने 10th में भी सही से नहीं पढ़े थे. Okay. So yeah, so Okay. Okay. So your it was test okay. was quite hard. Hmm. It Then was how you hard, but cleared they that? were checking कि who will be. Yeah, they had. उनके पास ऐसा था कि हाउ कैन मतलब कितना जल्दी तुम टेस्ट को क्लियर कर सकते हो. इट वाज ऑन अ Okay. परसेंटाइल बेसिस रेदर देन ऑन परसेंटेज बेसिस. उसमें आपके Okay. कौन से क्वेश्चन पे कितने टाइम लग रहा है, दे वर आल्सो मॉनिटरिंग दैट. Okay. सो आई न्यू दैट. तो मैं सिर्फ तुक्के में सारे क्वेश्चन के आंसर्स देता गया एंड लकीली आई गॉट सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू. इवन आई डोंट Okay. नो हाउ आई गॉट, how I passed that Reliance interview, but yeah, that trigonometric questions बहुत hard थे और वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस थे, उसके लिए प्रिपरेशन नहीं हो सकती. Okay. इवन आई वाज थिंकिंग बीच में कि अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस ही करने थे तो फिर मैं कॉमर्स में क्यों आया. Okay. That was quite hard या questions for us as a या commerce student. या And you had they no were. group discussions, no GDs. No, no. Hmm. Okay. And what was your strategy for these? Just like this technical rounds and HR questions about the company questions. So how you prepared for that? Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द कंपनी क्वेश्चंस, मैं सीधा उनकी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट, एंड देयर आई रेड देयर होल एनुअल रिपोर्ट. I checked whether they fall under Fortune 500 list or not, whether this list has been updated, what were the numbers that where they are ranked in the whole world, you know, which industry do they pertains to, what all the budget changes are there for that industry. So I Okay. prepared. Yeah. And how you prepared your CV and technical questions? Okay, okay. Luckily, I won't say luckily. In campus, what they do, they only ask from your CV, and they ask very general questions. They do not ask any, domain specific questions. Okay. So campus में, whatever your CV, whatever you have written in CV, you have to know that. You have to know the basis of it. और अगर तुमने गलत लिखा है, झूठ लिखा है, तो at least make a story, क्योंकि सामने इंटरव्यूअर Right, right, पकड़ लेगा. right. So हम्म, basically, giving a gist of what you see, firstly for the test, like there is some psychometric test which was there in Reliance, and it was quite hard, but there is a percentile system which can definitely help candidates to pass yeah, that out. In that percentile system, you have to complete the questions, maximum questions in the given time frame, and even though you need to correct those questions also, so you need to follow that approach. yeah, No GDs are there, and for Reliance specifically, which you have gone through for interviews, you have to focus barely on your CVs, also about the company perspectives, and if you can, you have to prepare for the technical rounds also, because other companies are there which ask from the technical rounds, so you have to prepare for that yes. also. And, and any important, or you say that most difficult question they have asked from you during this interview process, whether it is Reliance or any other company Okay. you can remember. The most, hmm, yeah, I do remember. I have written, no, actually, I have not written that in my CV, but it was a general question. They asked me whether deferred tax asset is shown in the balance sheet or not. Okay. And since I have done most of my articleship in AS wali clients, AS में हम Okay. दिखाते हैं, तो I said yes. But later I came to know that in Okay. India we do not show deferred tax asset in balance sheet. So this was the No, most. actually, This was no, as far as I actually know, they I do think that not. okay, they do not. That company specific requirements might be हाँ, there, but as far as I know, most of the companies have to, but they have to show them net of whether it is deferred tax assets or liabilities. They have to show them as net figure. That's what the company needs to do. you Okay, okay? Let's and not get into the argument. Let's not get into the. Yeah, sure, please. sure, 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 sure. So, audience, if you want more explanation, you can definitely Google it.
And Yeah. now the next question which I want to ask is that how is the campus basically, Mumbai campus? Because so many companies were there. You said approximately 25% of the total companies were there in the Mumbai campus. So what was the venue? How you arranged to go there? Where did you stay? And what was the environment? And where were the interviewers sitting? Like that, basically. ओके, ठीक है। सबसे पहले तो इट वाज इन बीकेसी एरिया। दे वहाँ पे एक आईसीआई की बिल्डिंग है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। Okay. मतलब Okay. एज कंपेयर टू द वन इन दिल्ली, इट वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। देयर वर नो रशेस। Okay. दे हैड काफी सही सीटिंग कैपेसिटी एंड सीटिंग एरिया for interviewers Okay. and students who were there to give interview as well. Lunch facilities Okay. were also good. Uh, Okay. and what did you ask? Yeah, what? How did I get there? ठीक है. Right. Right. I And stayed there. हाँ, you were saying? okay. Okay. Please Okay, continue. okay, okay. Please, I am continuing. Okay. I stayed near the BKC area. There's a hotel. I took a hotel. I stayed there for 4 days, and it was not. Okay. Uh, It was around 1 or 2 kilometers away from ICI BKC. We call it ICI Bhavan now. Okay. So basically, like Uh, you stayed there for 4 days. So how many shortlistings you got of a day premiere or day one, whatever we say, day two? So how you manage that to stay there for 4 days? So like you okay. got shortlisting in First, four hmm. companies basically. Yes, you consented for four companies. So what was the interview schedule? That two companies on the first day, two companies on the other. So how you managed to stay there for 4 days like that? I had I had one company on day one, which was the NBFC, which I told you before. I had two companies on the day two. Uh, those were Reliance and the other one. And I had one other company on the day three. Okay, So I had स्टे मैं पूरा प्रिपेयर इसी हिसाब से होके आया था कि इफ आई एम किसी ना किसी एक में तो मेरा हो ही जाएगा, एंड लकीली हो गया। डेफिनेटली। हाँ, मतलब आपका पर्पस ये था बेसिकली कि 4 दिन रुकना है, 4 दिन में से एक ऑफर लेके आपको आना है, डे वन, डे टू और डे थ्री, वॉट एटलीस्ट एवर इट मे बी। हाँ। हाँ, राइट और एक राइट दिन राइट। घूमने का भी था मुंबई, बिकॉज आई वॉज कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो यू वेंट देयर विद योर बट हाँ, फ्रेंड्स मुझे और रिलायंस, या हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। हम चार दोस्त थे, एंड हम चारों की सेम शॉर्ट लिस्टिंग आई। हम चारों ने सेम जने को कंसेंट दी, एंड हम ओके। चारों का उन चारों कंपनीज में हुआ है, पर अलग अलग सब में। नाइस नाइस। चारों का डिफरेंट कंपनीज में। चारों का डिफरेंट नाइस। कंपनीज में हुआ है। ऐसा क्या वन इज इन कॉइंसिडेंस द रहा? डे वन का, we do not know. One got placed in the day one itself, so she went there. Second, that other company on day two, my friend got offer after 5 minutes of interview, so she went there. I got into Reliance, and on the day three, my the last friend, he got into another company. ओके। It was a nice experience. So nice. Actually, it is nice that you four went there and four in different companies and gave shortlisting for the all four. Nice. And one more thing that did you like felt any situation? Did you went into any situation in which you have to interview for two companies in a day and you have to choose among them, or you have to provide, like you have been selected in both of the companies and you have to give consent to any one, like that scenario? Okay. Yeah, it did happen with me on the day two. I'm trying to get into Reliance and the other company. Okay. तो मैं पूरा उस दिन का शेड्यूल बताता हूँ। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू दूसरी कंपनी में था 11 बजे का, बट सिंस Okay. इंटरव्यूअर्स नहीं आए थे तो वो डिले होता जा रहा था, Hmm. और मेरा दूसरा इंटरव्यू रिलायंस में था 3 बजे का। तो आई वाज सेइंग कि मेरा एक बार एक राउंड तो ले लो, एनएस दैट अदर कंपनी वालों, कि मैं कम से कम ये तो हो कि मैं Hmm. आगे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, शुड आई टोटली फोकस ऑन रिलायंस और नॉट। तो 2 बजे तक मेरा इंटरव्यू हुआ। देन दे टोल्ड मी कि आप जिस Right. पोजीशन के लिए देने आए हैं ना, जिस डोमेन के लिए, वी आर नॉट हायरिंग फॉर दैट डोमेन एनीमोर।
ये मुझे 2 बजे पता चला, एंड देन आई Okay. स्टार्टेड प्रिपेयरिंग Domain फॉर means? रिलायंस. Domain means they had different Okay. domains like DT, IDT, and internal audit, inspection, consolidation, business analyst. So I Okay. was actually giving an interview for consolidation, but then they said ki we do not have any vacancy left Okay. in this domain, so we are not hiring for it. They told me this at around 2 p.m. in the afternoon, and I had Reliance ka interview at 3. So I had prepared Reliance का interview in just 1 Okay. hour. Then Reliance का interview हुआ, उसके बाद Okay. But you had Reliance का old interview देने preparation. के क्या Yes. Yes. Reliance Yes. का Please interview देने के continue. बाद Reliance का interview it went for around 35 to 40 minutes. बहुत ग्रिलिंग हुआ था उसमें. उसके बाद जब बाहर आया, Okay. दे टोल्ड मी कि आपको 5 बजे तक आपके पोर्टल पर आ जाएगा. तो सिंस खाली बैठा जाता नहीं है, एंड दैट अदर कंपनी स्टार्टेड टेकिंग वॉक इन एज वेल, मैं उस दूसरी कंपनी में वॉक इन का फॉर्म भी भर कर आ गया. Okay. आई वाज लाइक कि आई वांट टू गेट 2 ऑफर्स. तो लास्ट में आके आई हैड एन Okay. ऑफर फ्रॉम रिलायंस एंड आई हैड एन ऑफर फ्रॉम अदर कंपनी एज वेल, बट दूसरी कंपनी का डोमेन वाज नॉट मेरे हिसाब का. सो आई एम हैप्पी दैट आई हैव जॉइंड रिलायंस. प्लस माय फ्रेंड वाज देयर एज वेल. Okay. शी टुक माय फोन एंड एक्सेप्टेड रिलायंस. तो ठीक है. Nice. It's quite interesting story that you were there for the Reliance and then you didn't get a chance to being interviewed for that other company because अभी कैंडिडेट के साथ हो क्या रहा है कि उनके पास फर्स्ट डे पे आप डे 1 पे ऑलरेडी रिजेक्टेड हो, आपके पास कोई ऑफर नहीं है. डे 2 पे आपके पास दो कंपनीज है, एक आपसे बैकआउट कर रही है कि जो सिलेक्टेड आपकी प्रोफाइल की उसके लिए अवेलेबल नहीं है उसके पास में. फिर यू हैव टू मेंटेन दैट कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी मोरल आपको हाई रखना पड़ेगा कि वी कैन फाइट फॉर रिलायंस. पर्टिकुलरली वो जो अपना मेंटल सिनेरियो उस टाइम पे रहता है, तो उस अकॉर्डिंग आपने फिर रिलायंस के लिए मैनेज करा. फिर आपका थोड़ा अच्छा गया तो फिर आपने वापस बोले उस कंपनी में तो दूसरा ऑफर लेके रहूंगा. देन फाइनली आपको जो रिलायंस का ऑफर चाहिए था वो आपको मिल गया. सो लाइक पूरे दिन आपके पूरा बिजी रहा, मतलब आप वहाँ पे 9 बजे पहुंचे होंगे. फिर उसके बाद इंटरव्यूअर्स आए, 3 बजे जाके आपका इंटरव्यू हुआ, मतलब 2 बजे पहला हुआ, 3 बजे दूसरा, मतलब फुल डे हेक्टिक स्केड्यूल इट वाज देयर बेसिकली. सो आई डिड नॉट हैड उस टाइम पे लंच दैट डे. ओके यू डिडंट हैड. सो द लंच वाज क्वाइट वेल. टाइम ही नहीं था. लंच काफी अच्छा था. हाँ. भूख भी नहीं लगती उस दिन. सो बेसिकली रिलायंस का जब आप इंटरव्यू दे रहे थे आपने बोला कि काफी ग्रिल किया आपको, 35 to 45 मिनट्स पूछा आपको. तो बेसिकली या उस टाइम पे कुछ आपको एंजाइटी हुई होगी या फिर कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया होगा जैसे आपने बताया अभी, तो वो पर्टिकुलरली कैसे कंट्रोल किया आपने? ओके, वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ था नहीं, ग्रिलिंग हो रही थी बट आंसर आ रहे थे. बट इतनी नर्वसनेस हो गई थी कि बाद में जब एचआर ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन रिलायंस, मैं ब्लैंक हो गया था. ऑल्दो ओके. आई हैव practiced this question for like 5 to 6 times before giving that interview. बट वहां जाके वो ओके. ब्लैंक हो गया था. एंड आई मैंने कुछ भी बोल दिया एचआर को. एचआर सेड हार्दिक, वी हैव सो मेनी कैंडिडेट्स एंड वी हैव लिमिटेड सीट्स. आई एम गिविंग यू राइट. वन मोर चांस, वापस सही से बोलो. सो आई आई ही सेड सेड कि दैट. मेरे को 2 मिनट चाहिए. आई क्लोज, या I closed my eyes, I took deep breaths, and then I said, why do I want to join Reliance? And I think they liked my नाइस. answer, नाइस. so नाइस. it नाइस. worked. सो बेसिकली patience needs to be worked there. You should be patient because आपका अगर आंसर आया नहीं तो you can take 2 minutes instead of quoting the wrong answer or saying anything. You can take some time. That is quite fine. Or You should like actually. right. And what was the post-interview process? Just like you told, you got the offers from both of them, and your friend consented to one, Reliance one, and like any other thing happened there? Like you want to tell to the audience that any other person suffered from that problem or like that, because that is like a general problem people face. So if you can tell. Okay. Let me tell you a 2 3 incidents that happened from 2 3 different point of views. I'll ठीक है. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे को दो कंपनी से ऑल्दो ऑफर आया, बट आई वाज मोर ईगर टू जॉइन द रिलायंस वन. बट आई वाज
डिस्कसिंग इट ओके विद माय मेंटर, और मैंने फ्रेंड से पूछा जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हाउ इज द कल्चर एंड ऑल। मैंने मेरे प्रिंसिपल से पूछा, तो दे ऑल सेड कि रिलायंस कर लो। तो ओके फिर मेरे करने से पहले मेरे फ्रेंड ने कर दिया। ठीक है, दे वर अ सेकंड पर्सन हु नो हु न्यू कि उसका रिलायंस का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। ही वॉज वेटिंग कि मेरे ओके पास 5 बजे कैंपस के पोर्टल पर आ ही जाएगा। तो उसने कहीं और जगह ट्राई नहीं ओके किया, और फिर 5 बजे उसका नहीं आया। तो वो बहुत ओके वो हुआ था, अपसेट। एंड देयर वाज थर्ड पर्सन, उसका जहां से आना, मतलब जहां पे उसका इंटरव्यू शेड्यूल था वहां से तो आ गया, बट ही वांटेड टू जॉइन अनदर कंपनी। उसने उसका वॉक इन दिया, सब दिया। उसको लग रहा था कि वॉक इन के लिए ही विल बी एबल टू मैनेज इट, उसके पास आ जाएगा ऑफर, तो उसने बाकियों को नहीं दिया सिंस दे हैव अ डेडलाइन। उनके पास एक टाइम लिमिट होती है कि आपको इतने टाइम तक तो करना ही है, राइट आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है। उसने सोचा वहां से तो राइट आएगा ही, तो मैं यहाँ नहीं करूंगा। तो ओके उसका वहां पे भी नहीं हुआ और उसका यहाँ पे भी नहीं हुआ, तो मोराल बहुत डाउन था वहां पे। एंड सिंस सिर्फ 5,000 आउट ऑफ 16,000 पीपल रजिस्टर्ड इन फर्स्ट इन द मेन कैंपस, आई थिंक 3 to 4,000 ओनली गॉट जॉब, बाकियों को राइट नहीं राइट मिली। सो ऑल्दो मेरे साथ सही हुआ, मेरे फ्रेंड्स के साथ सही हुआ, बट वहां पे वैसा सीन तो था ही। मोराल बहुत डाउन था लोगों का, बच्चों का, लोगों तो क्या बोलूं। राइट 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 सो बेसिकली दो क्या तीन चीजें इससे निकल के आती है। फर्स्ट तो हाँ कि जैसे प्लीज। आपका एम था कि पर्टिकुलरली रिलायंस है तो आपने बेसिकली उसको एम किया और दो तीन में आउट होने के बाद भी अपना मोरल डाउन नहीं करा। दूसरा कैंडिडेट की जो उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि आई गॉट ए शॉर्टलिस्टिंग और आई गॉट ए ऑफर फ्रॉम रिलायंस बट उसका नहीं हुआ। तो एट दैट टाइम यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। अभी कंडीशन ये है कि अभी नहीं आया तो नहीं आया, दैट्स ऑल। और तीसरा कैंडिडेट जो पर्टिकुलरली आपने बताया कि उसके पास था ऑफर इवन देन ही वाज वेटिंग फॉर द अदर ऑफर इन रिजेक्टेड दैट। तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो जो है, मतलब आपको इमोशंस के साथ और अपनी मतलब माइंड के साथ कैसे डील करना है, आपको लोगों प्रॉपर पर्सन से आपको उस टाइम पे सजेशन लेना है, तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी उस टाइम पे, जो उस टाइम पे बहुत मैटर करेगा। तो ये सब चीजें और बहुत। मोरल बेसिकली डाउन नहीं करना है बिकॉज आपके पास मान लो कुछ नहीं भी हो पाता तो बाद में भी है एक्चुअली में जॉब्स। मतलब यू हैव टू बिलीव इन दैट सिस्टम क्योंकि ऑफिशियल डेटा जो आईसीए ने पब्लिश किया, लास्ट कैंपस में 3700 पीपल गॉट ऑफर्स आउट ऑफ दैट 20,000 सीएस और 16,000 रजिस्टर्ड। एंड आउट ऑफ देम 2700 2800 approximately accepted that offer. So that was the condition of basically this campus. So या you have to prepare for that and you have to be like acknowledge that if this is not the case, I am not getting there, then I would definitely get in some other company or other work I will do. So that and final question from you that did you have any offer on that date on which you sat in the campus, and if that is there then how it boosted your confidence or like that. Okay, so yeah, I had few offers from companies. I'll not name them. ठीक है, my friend suggested me Okay. कि Hardik, you have to get some offers off campus before going for campus. First, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड, जब ऑफर्स होते हैं तब कॉन्फिडेंस बहुत आता है। एंड Right. थर्ड है कि यू विल नॉट बी इन दैट सिचुएशन कि तुम्हारा मोरल डाउन हो, क्योंकि अगर एक जगह रिजेक्ट हुए तो यू ऑलरेडी नो कि तुम्हारे पास दूसरा ऑफर है। Okay. हाँ, सो दैट उसी की वजह से मेरी मेंटालिटी ऐसी थी कि मैं फर्स्ट कंपनी दैट ऑन डे वन रिजेक्ट हुआ, आई डिड नॉट केयर बिकॉज आई न्यू आई हैड 3 मोर। जब मैं सेकंड डे पे फर्स्ट में हूँ पता चला तो भी नहीं हुआ, एंड आई वाज रियली थिंकिंग कि अगर रिलायंस में नहीं होता है तो भी कोई ना, आई हैव फोर्थ कंपनी विद मी एज वेल। इसमें नहीं हुआ तो उसमें Right. मैं करूंगा, उसमें भी नहीं हुआ तो आई ट्राई समथिंग एल्स, अगर कुछ नहीं हुआ तो आई हैव माई बैकअप ऑप्शन। तो या Right. Right. वो Right. ऑफर होना बहुत चेंज करता है मेंटालिटी। Right. यू आर स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट। So right. Brief about that. Like हमारे पास ऑफर है तो बेस्ट है, अगर नहीं भी है तो यू शुड नॉट डाउन योर मोरल कि बाद में भी आफ्टर कैंपस भी कुछ ऑफर आप ले सकते हो। मीन्स इट इज नॉट द एंड बेसिकली, बिकॉज इट स्टार्ट योर प्रोफेशनल लाइफ एंड यू विल डेफिनेटली गेट द वन।
सो ये सब आपने मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बताए लोगों को कि कैसे इनको आपको रिजॉल्व करना है, अपने मोरल को कैसे हाई रखना है, आपको कैसे कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करना है, एंग्जाइटी फियर को कैसे कंट्रोल करना है, और क्या क्या मतलब वहाँ पे कंडीशंस आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्या क्या सिनेरियोज रहते हैं। तो ये सब आपने बताया बेसिकली कैंडिडेट्स को, जो मुझे लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है जो अभी कैंपस होने वाला है मुंबई में। तो थैंक यू सो मच हार्दिक फॉर कमिंग हियर फॉर गाइडिंग द ऑडियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू जतिन फॉर हैविंग मी।